Hello to all of you. How are you all? I hope everybody is fine at home. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेरा दूसरा presentation on Python. Earlier we have done with that brief description about Python language, and today I'll start with the Python fundamentals. ठीक है, पहले हमने क्या किया था पाइथन के बारे में, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसका ब्रीफ फीचर्स एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव डन, एंड टुडे आई विल स्टार्ट विद पाइथन फंडामेंटल्स. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड टोकन. Tokens are the smallest element or a unit of program, like keywords, identifier, literals, or operators. Means tokens are the smallest unit of any programming language. It's not only in Python, all these things, it's there in each and every language. Right? So they have the different category also in token, like keyword, identifier, literals, operators. So we'll do one by one all the things. Okay? Let's start with keywords. What are keywords? Keywords are the predefined reserved words in any programming language. Means keywords have some specific tasks. It's already predefined in the language. So there are different commands for the keywords, and they have their own specific tasks. For example, I mentioned here about print. Print statement is used to print the value which I have mentioned in the print statement, in the print command. Like input. Input is used to take the value from the user. Fine. If, for, while, these are the conditional and looping statement, we'll do in the later on stages. But right now you need to know all these are the keywords. Fine. They have a specific task which needs to be fulfilled whenever we need to use these words in a program. Okay. Next term is identifiers. Identifiers means to give the identity to any variable or function, class, module, or any term of Python. I need to give some identity for that. Like my identity is my name, Kamalpreet. And the same thing, we have to give the identity to a specific letter. This is the identity of this, and this is the work for that particular variable. Okay, for that we need to follow some rules. Like first rule is we have to give the name the letter. We have to start it with a letter from A to Z. Any letter I can specify, either in capital letters, either in small letters. Next rule is what? Keywords cannot be used as an identifier. As I told you earlier also, keyword का एक specific task है, वो वही करेगा. उसका वो word का नाम मैं as an identifier नहीं दे सकती. I cannot give the print name into the any variable or any term of Python. Okay. Third rule क्या है इसका? We cannot start with any number. If I need to give the identity to any term, for example, मुझे किसी variable का नाम EMP देना है. ठीक है, तो मैंने उसको EMP दे दिया. I cannot put 9 EMP. I can put EMP 9, but I cannot give 9 EMP. Or I cannot start with any of the number in that. ठीक है. Same spaces और symbols के लिए मैं spaces provide नहीं कर सकती. अगर मुझे किसी letter का नाम EMP name देना है, ठीक है, तो if I give EMP space name, I cannot give. It won't accept. It will show you the error. So I cannot give the spaces. I cannot give special symbols over there. Whatever the symbols are there in the keyboard, I cannot give that. So it should be started with a letter. It can be a single letter. It can be a group of letters. But it should be started with letter, not with a number, not with the special symbol, anything. Fine. Next is literals. What are literals? Literals are the specific fixed value or a constant value if we need to specify in our program. ठीक है, जैसे constant value है pi की, that is 3.14. It is fixed. ठीक है, same as if I need to fix some value for any particular task, so I can fix it. If I'm specifying the fixed value as a number, तो वो integer literal कहलाता है. If I'm specifying a decimal value, so that is known as float literal. If I'm specifying any string value or any character, that is known as string value.
फाइन। अगर मेरे को कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी, अगर मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, मुझे कोई भी वैल्यू वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करानी। इफ आई एम स्टोरिंग सम टेबल से एज, ठीक है, तो टेबल्स में मैं कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर कर रही हूँ, तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में एक वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, ठीक है, मुझे क्या क्या स्टोर करना था, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज, तो सपोज अभी उसकी सैलरी मैंने स्पेसिफाई नहीं करी, तो आई डोंट वांट टू स्टोर दैट. For that, I can put there in place of any salary, I'll put it there none. None means absence of value. इससे मुझे पता चल जाएगा कि I have not specified the value here. Fine. For that, you can use the word a none. Next is bool. Bool means boolean. If I need to store true or false in my statement, fine, so I can use this bool value. किसी भी रिकॉर्ड में अगर मुझे ट्रू और फॉल्स में अगर कोई वैल्यू या डेटा स्टोर करना है, तो मैं उसमें बुल के थ्रू मैं उसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ, फिक्स कर सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का ट्रू है रिकॉर्ड या इसका फॉल्स. राइट. चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग कैलकुलेशंस या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. लाइक इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है. लाइक फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. इन माय प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैव यूज्ड ऑल दिस ऑपरेटर्स. फाइन. In the next slide I'll show you how to do all this and how to perform. Fine. Next is relational operators. Relational operators का मतलब होता है इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न होती है. लेस देन दो वैल्यूज, दो कंडीशन है मेरे पास कि इनमें से दो वैल्यूज है. आई नीड टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर. इफ आई हैव टेकन द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, दो वैल्यूज मैंने यूजर से ली, उसमें मुझे चेक करना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है. ठीक है, तो इन दैट केस आई नीड टू यूज दीज सिंबल्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स. दीज आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स. वी हैव यूज्ड ऑल दिस सिंबल्स इन माय मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आल्सो, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. इसमें एक लास्ट सिंबल है नॉट इक्वल्स टू, व्हिच मींस अगर वैल्यू मुझे इसके नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, उसकी इक्वल नहीं है, तो we can use this. And I forget to use one operator here, that is equality, double equals to. वो किस लिए यूज होता है? कंपेयर करने के लिए. क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? अगर दो नंबर्स को मैं चेक कर रही हूँ, क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं? I can use these operators in that case. Next is logical operators. Logical operators कौन से होते हैं? And or not. And का मतलब होता है, ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जो लॉजिक गेट्स में आता है ये एंड और नॉट. एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस आपकी जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा. तो एंड के केस में हमारी दोनों जो भी हमारी वैल्यूज है वो ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी हमने कंडीशन स्पेसिफाई करी है, तभी वो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा. और का मतलब होता है दोनों में से, लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक ट्रू हो जाए. एंड में दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, और में कोई एक. And not means uska just opposite. If I am specifying the condition for true, so it will give me the result in false. If I am specifying the result in false, it will give me the result in true. ठीक है, उसका opposite आता है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं. Arithmetic, logical will do it in the programs later on. Like see, multiply sign I have used 12 into 3. The result is 36. Divide मैंने किया तो decimal में आ गया. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सिंगल स्लैश इफ यू आर यूजिंग तो इट विल गिव यू द कंप्लीट रिजल्ट. एंड इफ यू नीड नॉट टू गेट द डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ही चाहिए आपको, मींस न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, तो यू नीड टू पुट इट डबल स्लैश, तो वो सिर्फ आपको क्वोशिएंट वैल्यू देगा. ठीक है. डबल स्टार व्हिच वे आई हैव मेंशन्ड देयर इज यूज्ड फॉर पावर. 3 to the power 2 क्या आएगा? 9. अगर आप यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देंगे तो ये 27 रिटर्न करेगा. 3 to the power 3. That will give you the result in 27. Next is percentage sign, which is used for remainder. अगर मैं 2 को 45 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर में मेरे पास क्या आएगा? 1. ये मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया. 45 is greater than 3. I'm using all these commands in the interactive mode, जो हमारा मेन प्रॉम्प्ट होता है. ठीक है, तो 45 is greater than 3. मैंने आपको बोला था कि ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करेगा. That will give the value as in true. If 4 is less than 1, it will give me the value as in false. अगर मैंने कहा 23 is not equals to 3, क्या ये true है या false? True है ना, because 23 is not equals to 3. If I'm specifying 23, जैसे जो मैंने नहीं specify किया यहाँ पे double equals to, this is known as equality operator. 23 is equals to 23? Yes, true. Last is if I'm specifying 34 equals to 2, this should be false.
Okay, so like this we can use all these operators in my program. ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग प्रोग्राम्स में यूज करेंगे अभी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जो मेजर रोल है, दैट इज योर वेरिएबल एंड डेटा टाइप. वेरिएबल एंड डेटा टाइप का यूज हम हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में करते हैं. जैसे ये ऑपरेटर्स का यूज हम हर एक लैंग्वेज में करते हैं, फंडामेंटल्स का. सेम वेरिएबल एंड डेटा टाइप इज देयर फॉर एवरी लैंग्वेज, नॉट ओनली इन पाइथन. ठीक है. नेक्स्ट, वेरिएबल का मतलब होता है द एरिया वेयर आई एम स्टोरिंग दीज वैल्यूज. राइट, लाइक आई हैव स्टोर हियर a is equals to 4. तो मैंने क्या स्टोर किया, ए क्या हो गया, मेरा वेरिएबल का नाम हो गया, उस मेमोरी ब्लॉक का नाम हो गया जहाँ पे मैंने वो वैल्यू स्टोर करी. तो मैंने उसको एक नाम दे दिया. दिस इज नोन एज आइडेंटिटी. ये एक सिंगल लेटर में भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ लेटर. जैसे सेकंड एग्जांपल आई मेंशन हियर EMP. दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल नेम. व्हाट आई एम स्टोरिंग हियर, आई एम स्टोरिंग सम टेक्स्ट वैल्यू. लेटर्स, वर्ड्स का यूज में कर रही हूँ इस EMP में. सो व्हाट इज दिस A and EMP? दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. नाउ व्हाट आई एम स्टोरिंग हियर, आई एम स्टोरिंग सम वैल्यू. Which kind of value I'm storing here? I'm storing in A, I'm storing number. ठीक है. तो which kind of value are what I'm saying? This is known as data type. ठीक है. Which tell us the kind of data or a type to store in variable. ठीक है. तो हमने किस तरीके की वैल्यू ए में स्टोर करी, ये नंबर स्टोर करा ना. और इसमें मैंने किस तरीके की वैल्यू स्टोर करी, आर स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग. Right. So there are 3 kinds of data type in Python majorly, which we are working for programming. Although there are other data type also, which we'll do one by one later on. But right now I'm telling you, insisting you for these 3 data type. तो पहला क्या है आपका integer. तो अगर मुझे कोई नंबर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो दैट इज नोन एज इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है, सिर्फ नंबर, दैट इज नंबर एक स्टोर करें. अगर मैं कोई एक टेक्स्ट वैल्यू, एक सिंगल लेटर K या J स्टोर कर रही हूँ या ग्रुप ऑफ लेटर स्टोर कर रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर लेटर में, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है. लाइक इन द प्रीवियस आई हैव स्टोर्ड हियर कमल, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन अ ग्रुप ऑफ दिस वेरिएबल नेम EMP दिया. तो आप कोई भी दे सकते हो, एक सिंगल लेटर का भी वेरिएबल नेम दे सकते हो और ग्रुप ऑफ लेटर्स का भी नाम दे सकते हो. यहाँ पे मैंने एक सिंगल लेटर दिया. ठीक है, तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो. अच्छा, वन थिंग मोर, you can store whenever you're storing the text value or a letter, you need to put it in double quotes or in single quotes. See, hello को मैंने double quotes में लिखा है and J are specified in single quote. तो both the things are acceptable in this Python. ठीक है, तो whenever you're storing some characters or a group of words, you have to store in that data type is known as string. If you're storing numbers, that is known as integer. And if you're storing some decimal values, that is known as float. अभी आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है. 3 तरीके डेटा टाइप आपको पढ़ने हैं, और भी है, we'll do later by one. Although I have specified here, you can check here. But we will start with this 3 majorly. Okay, chalo, let me give you a practical of this. Sorry. I'll share my screen in front of you, Python shell, so that you can check. मैं यूजर से वैल्यू लेके दिखाती हूँ. ठीक है, A is equals to int. अच्छा, what I'm writing, I'll tell you. Let me write it first. Int. Enter the first number. Double quotes. मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया और एक इंट लिया. व्हाट डज इट मीन? जब भी मुझे यूजर से वैल्यू लेनी होगी तो आई नीड टू मेंशन इनपुट. कोई भी वैल्यू अगर मुझे लेनी है तो मैं उसको इनपुट से लूँ और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करूंगी जो भी मुझे देना है, ताकि यूजर को पता चले कि मैं क्या वैल्यू ले रही हूँ. ठीक है, इनपुट इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग, नॉट फॉर इंटीजर, नॉट फॉर फ्लोट. तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है अभी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना रही हूँ. ठीक है, अब तो मुझे नंबर स्टोर करने उस मेमोरी ब्लॉक में, इस A वेरिएबल में. तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनपुट इनटू इंटीजर. ठीक है, तो आई नीड टू मेंशन हियर इंट. इंटीजर को हम लोग यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, इंट. नेक्स्ट, अगेन B इज इक्वल्स टू 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स चाहिए हमको इसके एडिशन के.
ठीक है, चलिए मैं पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज आई नीड टू राइट द सेम स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कंट्रोल वी। लेट मी राइट इट हियर सेकंड, ओके, एंड देन C is equals to A plus B। थर्ड वेरिएबल हो गया ये, पहला वेरिएबल पहली वैल्यू के लिए, बी वेरिएबल हमारा दूसरी वैल्यू के लिए, थर्ड वेरिएबल जिसमें मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट स्टोर हो रहा है। ठीक है, प्रिंट आई मेंशन हियर द result is, this is my message, comma C, close, like this. Fine. Now I need to save this file. I'll save, suppose मैंने QW के नाम से सेव किया, yes, fine. अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। I need to press F5 key. Okay, let me share the screen also, this one also, so that you can see the result. I hope you are able to see the result. 23, 34, see, the result is 57. Okay, again I need to come back to my shell. अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो आई नीड टू डू F5, okay, again I need to share, चलो यहाँ पे मैंने डाला 5, result is 2.5। ठीक है, so like this you can do a simple calculation with the help of this arithmetic operators in this. Fine. Okay, let me come back to my this screen. आया नहीं? Share, is it there? Okay, चलिए, so like this we have done. Now did you get it? Int input, enter the first number, int input, enter the second number, or the result is this. Fine. So C is equals to A divided by B, print the result is C. So like this you can mention the input। समझ में आ गया? जब भी आपको यूजर से वैल्यू लेनी है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा इनपुट। अगर वो टेक्स्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर दूँ, ये तो एक नंबर है तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ अपना नाम प्रिंट करना है, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, इसमें एक सिंबल यूज होता है हैश। अगर मुझे इसे कमेंट करना है, मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, फाइन, तो मैं इसका इंटरप्रेटर्स को इस लाइन को कोई भी रीड ना करे, तो इसका इंटरप्रेटर्स को रीड ना करे, सो दैट आई हैव पुट इट इन हैश सिंबल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना चाहती हूँ। ओके, तो F5 प्रेस किया। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, अच्छा, इसमें मैसेज टू एंटर द फर्स्ट नंबर आ गया। चलिए मैं यहाँ पे डालती हूँ कमल, द रिजल्ट इज कमल। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन मीन्स गिव चेंज द स्टेटमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे इनपुट द फर्स्ट नंबर ही लिखा, एंटर द नेम कर सकते थे आप इसे यहाँ पे, तो एज यू वांट यू कैन चेंज इट्स द वैल्यूज एंड द स्टेटमेंट्स। ओके, चलिए, let me think is anything is left in this। arithmetic operators हो गए, relational operators का यूज हम कंडीशनल स्टेटमेंट में करेंगे, तब आपको और इजीली समझ में आएगा। चलिए, कम बैक टू माय presentation। I hope you understand now what is variable and data type। variable वो एरिया जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, और डेटा टाइप किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उसके अंदर।
तो वो हमारा क्या है, या तो वो इंटीजर होगी, इंटीजर का मतलब क्या है, नंबर्स को स्टोर कर रहे हो। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है, मीन्स कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, तो आप उसका मतलब है आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हो। और अगर आप डेसिमल वैल्यूज यूज कर रहे हो तो दैट इज नोन एज फ्लोट। ऑल्दो पाइथन इज नॉट मीन्स आप इसके अंदर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टोरिंग ए में, अभी जैसे मैंने पहले एक नंबर स्टोर किया और उसी वेरिएबल में मैंने अपना नाम भी स्टोर किया, तो it acceptable. We need not to declare the data type beforehand as we have to do it in other languages. कि हमें पहले data type define करना पड़ता है variables के लिए, fine, तभी वो आगे काम करता है, तो वो fix हो जाता है variable. Like a के लिए मैंने अगर यहाँ पे number store किया है तो ये a fix है, दूसरी लैंग्वेज में, पाइथन में नहीं। पाइथन में a के अंदर अगर मैंने 23 स्टोर किया तो मैं a के अंदर hello भी स्टोर कर सकता हूँ। I can store string value, I can store the decimal value also. Fine. So this is my last slide. Hope you like it, and please do mention your valuable feedback and the comment in the comment box. And if you have any query related to this, as I said earlier also, please write it in the given mail ID which I mentioned here, kamal18delhi@gmail.com. Or I also provide some online classes for computer subject, others computer subject. So if you have anything, please do write on my given mail ID. Thank you.